The topic we are going to discuss about is reaction kinetics, and the subtopics are rate of reaction and rate constant. That's why we discuss reaction rate in terms of instantaneous rate and average rate. Instantaneous rate is defined as the rate of change of concentration of any one of the reactant or product at a particular time, while average rate is defined as the rate of reaction measured over a long time interval. जब हमें किसी particular time पे concentration of reactant या product को measure करेंगे, for example just for a second, 5th second पे 6th second पे measure करेंगे तो हम उसको instantaneous rate कहेंगे. लेकिन अगर हम उसको एक long time interval पे measure करेंगे, like for 10 minutes, for 5 minutes, for 15 minutes, so it would be average rate. Expression would be, let us consider reaction A plus B, these are reactants, और एक combine करके एक product C बना रहे हैं. So dx over dt equals to minus d into A over dt. यहाँ पे जो A है उसके साथ हमने माइनस साइन इसलिए लगाया, और यहाँ पे सिमिलरली B के साथ भी हमने माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रही है. सो माइनस साइन इज बेसिकली इंडिकेटिंग द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, जबकि जो C के साथ हमने एडिशन का साइन है क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, इट मीन्स उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है. एंड फॉर एवरेज रेट एक्सप्रेशन वुड बी सेम, रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं हम A प्लस बी कंबाइन टू फॉर्म C प्रोडक्ट. सो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी होगा. In this graph, you can differentiate between average rate and instantaneous rate. जो instantaneous rate है वो particular points पे है, A point पे, B point पे, ठीक है. So ये क्या होगा, instantaneous rate. लेकिन अगर हम इन दोनों points के दरमियान rate को measure करेंगे कि point A से point B तक के दौरान हमारे पास rate of reaction क्या था, it would be average. सो इंस्टेंटेनियस जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे लेते हैं हम, जबकि उन्हीं पॉइंट्स के दरमियान अगर हम मेजर कर रहे हैं तो फिर इट वुड बी एवरेज रेट. लेट्स सी सम मोर डिटेल्स अबाउट इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट. द एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट आर इक्वल फॉर ओनली वन इंस्टेंट इन एनी टाइम इंटरवल. किसी एक टाइम इंटरवल पे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल होंगे. At first, instantaneous rate is higher than the average rate, while at the end, the instantaneous rate becomes lower than the average rate. When delta t approaches to 0, average rate becomes closer to instantaneous rate. जब हम delta t को almost 0 के equal रखते हैं तो तब average rate जो है वो instantaneous rate के बहुत close हो जाता है, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत कम होगा, इट्स अबाउट एन इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट. सो जो हमारे पास जो एवरेज रेट है वो इंस्टेंटेनियस रेट के इक्वल हो जाता है. लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन. एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट इज मोर, एवरेज रेट इज मोर, both are equal, none of these, and the correct option is instantaneous rate is more. Here is another graph indicating the same thing कि जो instantaneous rate होता है वो हम particular points पे लेते हैं, और दो points के दरमियान जब हम measure कर रहे होते हैं, एक time interval के दरमियान हम measure कर रहे होते हैं, तो हम उसको average rate कहते हैं. Instantaneous rate जो है वो start of the reaction पे ज़्यादा होता है, जबकि average rate जब हम लोग end of the reaction की तरफ जा रहे होते हैं तो average rate ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. So now we have another definition of rate of reaction. The instantaneous change in the concentration of a reactant or a product at a given movement of time. So expression is dx over dt, where dx is very small change in concentration in a very small interval delta t.
सो इंस्टेंटेनियस चेंज जो आता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सो इसको हमने बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट की टर्म्स में डिफाइन किया। सो dx over dt is called the rate of change of concentration with respect to time. dx is change in concentration, dt is change in time. The rate of a general reaction A converted to B can be expressed as rate of reaction equals to minus D into A over dt. A is the concentration of reactant equals to D into B, that is concentration of product, over dt. Negative sign indicates decrease in concentration, क्योंकि with the passage of time reactant की जो concentration है वो decrease होती है, that's why we have added negative sign to the reactant, while that positive sign indicates increase in concentration. With the proceed in the reaction जो product है वो increase होती है, that's why we have put a positive sign with the product. Before going into the details, let's see law of mass action. The relationship between the rate of a chemical reaction and the active masses expressed as concentrations of the reacting substances is summarized in the law of mass action. It is stated as the rate of reaction is proportional to the active mass of the reactant or to the product of active masses of reactants if more than one reactants are involved in a chemical reaction. किसी भी chemical reaction का जो rate है वो reactant के active masses के directly proportional होता है, या फिर अगर reactants एक से ज़्यादा हैं तो फिर उनके product of active masses of reactants के directly proportional होगा. So for dilute solution, active mass is considered as equal to concentration. By applying the law of mass action to general equation, we get, यहाँ पे हमने reactants और products के साथ उनकी concentrations mention कर दी हैं, and rate of reaction में जो concentration terms हैं वो raised हो जाएंगी. So K would be A into concentration of A while B into concentration of B. So ये जो expression है ये हमारे पास rate equation आती है. Rate of reaction equals to K. K is proportionality sign. So reactants के साथ जो उनकी concentration terms हैं वो हमने add कर दी. So in the previous expression, the brackets represent the concentrations and the proportionality constant K is called rate constant or velocity constant for the reaction. Previous expression में जो K था जिसको हमने proportionality constant कहा था उसे हम define करते हैं as rate constant और velocity constant, और जो brackets थी वो concentrations को represent कर रही थी. So if we take reactants concentration equals to 1 mole per decimeter cube, equation would be K into 1 raised to power A into 1 raised to power B equals to K. So अगर हम reactants के concentration 1 यानी कि unity लेते हैं तो rate of reaction would be equals to rate constant or velocity constant for that particular reaction. In the previous slide we have seen कि जब हमने reactants की concentrations unity ली तो rate of reaction would be equal to rate constant. So now we have a term called specific rate constant जिसे हम define करते हैं the rate of reaction when the concentrations are unity. So under given conditions K remains constant but changes with temperature. So we can say rate constant is temperature dependent. Let's discuss differences between rate of reaction and rate constant. Rate of reaction is the speed with which reactants are converted into products. It is measured as the rate of decrease in concentration of reactants or increase in concentration of products, while rate constant is the proportionality, the rate law, and defined as the rate of reaction when concentration of reactant is unity. जब reactants की जो concentration है वो unity के equal होगी,
that rate of reaction would be rate constant. So the rate of reaction depends upon the initial concentrations of reactants, while rate constant is independent of initial concentrations of reactants. Rate constant के depend कर रहा होता है temperature पे, while its units are mole per decimeter cube per second, while जो हमारे पास rate constant है उसके units जो हैं वो order of reaction पे depend करते हैं. Here we have a question. Rate constant is concentration dependent, temperature independent, temperature dependent, pH dependent. And the correct option is temperature dependent. So this was all about the lecture. I hope you have understood it well, and thank you so much.